Perfect. October, November 2024, paper 1, variant 2. Again, a 1 hour paper, again 40 MCQs. Let's dive deep into them. So, yeah, the diagram shows a clothes peg. ठीक है, ये यूजुअली आप लोगों ने घरों में देखा होगा. दिस इज अ क्लोथ्स पेग. ठीक है, विच डिवाइस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ द क्लोथ्स पेग. अच्छा, हाइट ऑफ द क्लोज फेक कैसे निकाल सकते हो? ऑब्वियसली यू वुडेंट बी यूजिंग अ टेप. Micrometer can be used. Micrometer is a good option here. Micrometer C will be your answer. Micrometer is your answer. देखो, मीटर रूल आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज मीटर रूल विल बी फॉर लार्जर डिस्टेंसेस. एक सेकेंड. चलो, और माइक्रोमीटर्स यूज होते हैं फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स. ओके. विच सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स? भाई, कौन सी सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. यस, ए इज योर आंसर. सिंपल सिंपल बेटा, इन तरह के सवालों में आप क्यों नहीं लोगे 38 आउट ऑफ 40? वेरी वेरी इजी. हो सकता है किसी की डिस्टिंक्शन भी आ जाए इफ यू स्टडी करेक्टली. द ग्राफ shows the motion of a cyclist during a ride that lasts for 14 seconds. This is the distance time graph. What is the average speed of the cyclist for the ride? Okay, what is the average speed for the cyclist for the ride? So what is the formula? Average speed is equals to total distance over total time. Average speed is equals to what? Total distance over total time. What is the total distance? ये चीज. What is the total distance? ये चीज. This is what? 28. What is the total time? Is 14. ठीक है. Total distance 28 divided by 14. This comes out to be 2 ms minus 1 is your velocity. Any answers like that? A is your answer. Simple. At any point in time, कोई भी मसला होता है, just type it in the chat. The diagram shows the velocity of a train varies with time. Which sections of the graph shows the magnitude of the velocity of the train is decreasing? भाई, कौन से sections of the graph ये show कर रहे हैं कि आपकी magnitude of the velocity is decreasing? There is a very important trick here जो एग्जामिनर यहाँ पे कर रहे हैं बेटा. अगर समझ गए तो you will be more closer to an A star. Can you see here? Let's say this is 5, this is 4, this is 3, this is 2, this is 1. Throughout region P, आपका magnitude decrease कर रहा है. Yes, I agree with that. Your magnitude decreases. I agree with that. Now look at region Q. Let's say this is -1. Let's say this is -2. Let's say this is -3. What is happening during region Q? बेटा, रीजन क्यू के दौरान क्या हो रहा है? योर मैग्नीट्यूड इज समथिंग विदाउट साइंस. मैग्नीट्यूड इज अ नंबर विदाउट साइंस. मैग्नीट्यूड इज नंबर विदाउट साइंस. तो यहाँ पे कैन यू सी ड्यूरिंग क्यू योर मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग. सो क्यू विल नॉट बी योर आंसर. जो कि बहुत एविडेंट आंसर लग रहा था. दिस विल नॉट बी योर आंसर. However, during the region R, your magnitude again decreases from 3 to 2, 2 to 1. Yeah, B is your answer. Simple as that. Nothing complicated. किसी कोई सवाल unclear हो बेटा पूछ सकते हो. Let's move on to question 5. A metal disc is squeezed in the jaws of a vice. ठीक है भाई, एक metal disc है जो squeeze हो रहा है in the jaws of a vice. Which property of the metal disc is unchanged when it is squeezed? Always remember the mass of your object remains unchanged. आप बॉल को तोड़ो फोड़ो, वॉल्यूम चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, मास अनचेंज रहेगा. ठीक है. लेट्स फर्दर मूव अहेड. The gravitational field strength in space is smaller than on Earth's surface. How are the mass and the weight of a satellite affected as the satellite moves away from the surface of the Earth and into the space? Beta, always remember your mass is a very rigid quantity. Mass remains constant. The mass is unaffected. देखो एक ही ऑप्शन है. The mass is unaffected and the weight decreases. और weight बिल्कुल सही डिक्रीज होगा.
If your gravitational field strength on Earth is 9.81 ms minus 2, and let's say the gravitational field strength on space is 2 ms minus 2, तो बेटा जो space पे weight होगा that will be way lesser than the weight on the Earth. D is your answer. Let's further move ahead. A material has a density of this. What is the units in the density kg per meter cube? What a beautiful question. What a beautiful question. चलो बोर्ड पे फोकस करो बेटा. 2.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. बेटा अगर ये क्वेश्चन समझ लिया, कोई भी यूनिट कन्वर्जन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू नॉट डू रट्टा ऐसे क्वेश्चंस की वजह से. ओके, नाउ व्हाट हैव आई डन इज सेंटीमीटर क्यूब को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ गया बिकॉज स्लैश मीन्स व्हाट, स्लैश मीन्स दैट द यूनिट इज इन डिनोमिनेटर. परफेक्ट. नाउ लेट्स फोकस अ बिट, थोड़ा सा फोकस करते हैं. इफ यू वांट टू कन्वर्ट grams into kilograms, what will you do? You will divide it by 1000. If you want to convert centimeter square into meter square, what will you do? बेटा you know to convert. अच्छा अब ये चीज़ याद रख लेना. This is very important. This will also help you in A levels. If you want to convert centimeters into meters, you multiply by 10 raised to the power of minus 2. If you want to convert centimeter square into meter square, what do? You multiply it by 10 raised to the power of minus 2 whole square. This comes out to be 10 raised to the power of minus 4. If you want to convert centimeter cube into meter cube, what do? You multiply by 10 raised to the power of minus 2 whole cube. That is 10 raised to the power of minus 6. So you will multiply this by what? 10 raised to the power of minus 6 in the denominator. Now calculate the answer. भाई calculator में डाल के निकालो क्या आंसर आता है. This answer comes out to be 2.4 divided by 1000 into 10 raised to the power of minus 6. 24,000 kg per meter cube is your answer. D is your answer. समझ आई बेटा? इस बात की समझ आई? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. चलो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग. समझ नहीं आई? वेरी गुड. समझ नहीं आई तो वेरी गुड, बिकॉज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. चलो नाउ अगर आपके पास, चलो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ. सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. बेटा लेट्स से आपको 7 किलोमीटर पर आवर गिवन है. आपने इसको मीटर्स पर सेकंड में करना है, ठीक है. आपने इसको मीटर्स पर सेकंड में करना है. आई होप ये कन्वर्जन सबने देखी होगी. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस कन्वर्जन बेटा? इस कन्वर्जन में होता क्या है, आप 7 को इसी तरह लिखते हो. किलोमीटर स्लैश का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर. सो व्हाट विल यू डू? You will multiply 7 by 1000. Perfect. Now you have to convert hours into seconds. बेटा hours को seconds में convert करने के लिए क्या करते हो? Multiplied by 3600. But 3600 कहाँ पे multiply होगा? In the denominator. If you have studied maths from a good enough teacher, he might have told you कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में जाना है तो you will multiply it by this factor. और ये फैक्टर किस तरह आता है ये आज मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया. अब समझ आ रही है बात? इज दिस बेसिक एग्जाम्पल क्लियर? भाई बेसिक एग्जाम्पल क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स बात पे. वी विल अप्लाई द सेम लॉजिक टू एनी यूनिट्स. बेटा किसी भी यूनिट्स पे ये लॉजिक अप्लाई कर दो. अच्छा चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करते हैं. देन वी मूव अहेड. लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट 7 मीटर्स पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर. देखो इस तरह चीज़ों को सोचोगे तो यू विल ऑलवेज रिमेन वन स्टेप अहेड. यू वांट टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर, व्हाट विल यू डू? यू विल डिवाइड इट बाय 1000. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेकंड्स इनटू आवर्स, आप क्या करते हो बेटा?
अगर सेकंड को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो व्हाट डू यू डिवाइड बाय 3600। अब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में if you divide it by 3600, what will it do? It will go into the numerator multiplied by 3600, simple. तो इस तरह you can convert any units into the other units. चलो अब यहाँ पे आते हैं again. You have these units of 2.4 grams per centimeter cube. You want to go into which units? kg per meter cube. Okay. बेटा ग्राम से केजी में जाने के लिए आप क्या करते हो? ग्राम से केजी में जाने के लिए आप क्या करते हो? यू डिवाइड इट बाय 1000। परफेक्ट। और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करते हो? अभी एक्सप्लेन किया था। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम सेंटीमीटर इनटू मीटर, आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। इफ यू गो फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, क्या करते हो आप? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -2 को लेते हो, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, what do? आप 10 raised to the power of -2 लेते हो, उसका क्यूब लेते हो, this comes out to be 10 raised to the power of -6। This is the quantity which you will multiply if you want to go from centimeter cube to meter cube. तो सेंटीमीटर क्यूब का है बेटा डिनोमिनेटर में, मीटर क्यूब का है डिनोमिनेटर में, सो दिस 10 raised to the power of -6 will also come in the denominator. Your answer comes out to be 24,000 kg per meter cube. D is your answer. Is this entire mental gymnastics clear to all of you? Yes or no? These types of questions are what separate an A star student from an A student and probably a distinction wala student from an A star student. Chalo, let's further move ahead. Let's see this. An object falls vertically through air. Perfect. Which diagram represents the forces acting on the object? Perfect. Acha. Beta, if your object is falling through the air, if your object is falling through the air, always remember, if your object is falling through the air, always remember there will be air resistance. And air resistance acts opposite to the motion. बेटा ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर इन एयर, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी और एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। परफेक्ट। Which diagram represents the forces acting on the object? Okay. So if you are falling, there will be a weight force from earth on object. Yeah, that's correct. ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल ही गलत है। वाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स शुड बी अपवर्ड। वाई? बिकॉज यू आर फॉलिंग डाउनवर्ड बेटा, आप डाउनवर्ड फॉल कर रहे हो, एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। तो अगर आप डाउनवर्ड फॉल कर रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगनी चाहिए ना, ये नीचे क्या कर रही है एयर रेजिस्टेंस? बी एंड सी विल गेट कैंसल आउट। ठीक है। अब ऑप्शन डी तो और भी एब्सर्ड है, ऑप्शन डी तो और भी एब्सर्ड है। ये वेट की फोर्स क्या कर दिया है एग्जामिनर ने? ऊपर एक्ट करनी शुरू कर दी है। दैट इज इनकरेक्ट एज वेल। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। एट एनी पॉइंट इफ एनीथिंग इज अनक्लियर यू जस्ट आस्क अवे। ठीक है, लेट्स सी दिस। ये नोट्स में भी मैंने पढ़ाया था। A force is applied to a lever at a distance L from a pivot as shown. Perfect. अच्छा, so always remember if अच्छा air resistance opposes the motion, air resistance always opposes the motion. Perfect. So let's say you have a ball that is falling downwards. Let's say you have a ball falling downwards. Air resistance कहाँ लगेगी बेटा? Upwards. If you have a ball that is falling, or sorry, that is rising upwards, air resistance कहाँ लगेगी बेटा? Downward. Simple. So air resistance always opposes the motion of the object. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
Force F is applied to a lever at a distance L from the pivot as shown. Distance D is the perpendicular distance between the force and the pivot. Which expression gives the moment of the force? Very, very easy. Moment of the force क्या होता है बेटा? If this is diagonal force, you will take this force and the perpendicular distance between the force and the pivot. FD is your answer. C is your answer. A rocket is launched vertically upwards at a constant force from its engines. The data for the launch is shown. ठीक है. How much of the work done on the rocket is used to increase the speed in the first 100 meters? अच्छा, ज़रा focus करो इधर. A rocket is launched vertically upwards by a constant force from its engine. The data for the launch is shown. ठीक है. Data for the launch is shown. Weight of the rocket is this. ठीक है. Average air resistance is this. Perfect. Force from the engine is this. Perfect. How much of the work done on the rocket is used to increase its speed in the first 100 meters? भाई कितना वर्क डन हो रहा है ऑन द रॉकेट टू इंक्रीज इट्स स्पीड इन द फर्स्ट 100 meters? तो वेरी वेरी इजी. फोर्स फ्रॉम द इंजन क्या है? 3.5 मेगा न्यूटन. ठीक है, 3.5 मेगा न्यूटन. आप क्या कर सकते हो भाई? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यू कैन ड्रॉ अ रॉकेट. चलो लेट मी ड्रॉ अ रॉकेट. देयर इज अ फॉरवर्ड फोर्स दैट इज ऑफ 3.5 मेगा न्यूटन. बैकवर्ड एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है 0.1 मेगा न्यूटन. और एक वेट की फोर्स एक्ट कर रही है बेटा, दैट इज 1.9 मेगा न्यूटन. Can you guys calculate the resultant force here? Can you guys calculate the resultant force? Yes, 3.5 minus 0.1 minus 1.9, that is equals to 2 mega Newton. Now you don't have to calculate the force. You have to calculate the work done for the first 100 meter. So what is the formula of work done? Work done is equals to force into distance. Force क्या है? 2 into 10 is the power of 6. Distance क्या है? 100. Yes. What will your answer come out to be? Any geniuses? Hmm. Oh, बल्कि हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत की. This will be 1.5 mega Newton. क्या कर रहे हैं हम? This will be 1.5 mega Newton. 1.5 mega Newton multiplied by 100 will give you a work done of what? 150 mega joules is your answer. अच्छा, और हमेशा ये बात याद रखनी है बेटा, कुछ प्रीफिक्सेस एग्जाम में हमेशा याद रखने. अगर ये कैपिटल एम लिखा हुआ है, दिस मीन्स व्हाट? 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6. स्मॉल एम लिखा हुआ है, मिली, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -3. ओके, और कौन से रिपीटेड होते हैं? अगर किलो लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, दैट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 किलो. अगर आपका माइक्रो ये लिखा हुआ है, दिस इज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 माइक्रो. अच्छा, और या लेट से नैनो लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, दैट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -9. आई विल ऑल्सो सेंड अ वर्कशीट ऑन द ग्रुप जिसमें ये सारे प्रीफिक्सेस हैं. ठीक है. तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन 10 सबको क्लियर है? हम्म. थोड़ा सा लेक्चर्स रिवाइज करके आ जाओ तो क्या ही बात हो जाएगी. विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर? एफिशिएंसी किस तरह निकाल सकते हैं बेटा? Useful energy output divided by the total energy input. Yes, A is the correct answer. Simple as that. 12 पे आ जाओ भाई. Let's move on to question number 12. Question number 12 में क्या लिखा हुआ है भाई? Let's see. Four shapes of different masses are lifted through different distances in different amount of times. Which combination of mass, distance and time gives the greatest power transferred? अच्छा, हमने greatest power निकालनी है बेटा. पावर का क्या फॉर्मूला होता था? यस, डज एनीवन रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर इज इक्वल टू एनर्जी over time. Can you realize the energy that we are gaining here is gravitational potential energy? Gravitational potential energy over time will be your formula for power here. Let's calculate the power for A. Gravitational potential energy for A क्या हो जाएगी? 2 into 9.8 into the height that is 2 divided by time that is 3. पावर ऑफ ए बेटा निकालो क्या आता है?
2 into 9.81 into the height, that is 2, divided by the time, that is 3. This comes out to be 13.08 watts. Power of B निकाल लो भाई, क्या आता है? Power of B is what? 1.5 into 9.8 into the height, that is 2.5, divided by the time, that is 2. So power of B भी निकाल लो बेटा. You can calculate the power for B as well. ठीक है, पावर ऑफ बी भी निकालो, शाबाश. कैलकुलेट द पावर फॉर बी. द पावर फॉर बी विल बी व्हाट? Mass is 1.5, height is 2.5, g is 9.8, divided by the time, that is 2. इसको भी निकाल लेते हैं भाई. 1.5 into 2.5 into 9.8 divided by the time, that is 2. Your answer comes out to be 18.4 volts. अच्छा, राइट ऑफ द बैट मुझे पता चल गया ए आंसर नहीं होगा. Right off the bat, I know A will not be your answer because B की power has already been greater than A. Let's calculate it for C. Let's calculate it for C. Power of C is what? M into G, that is 9.8, into height, that is 2, divided by 1.5. Can any genius calculate this answer? 2 into 9.8 into 2 divided by 1.5. This comes out to be 26.1. Wow. बी भी आंसर नहीं होगा मेरा. 26.1 वोट्स इज योर हाईएस्ट पावर करेंटली. लेट्स कैलकुलेट इट फॉर ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी की पावर क्या आ जाएगी बेटा? मास इज 1.5, 9.8 into the height, that is 2.5, divided by the time, that is 1.5. चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.5 into 9.8 into 2.5 divided by 1.5. Your answer comes out to be 24.5. Wow. मतलब इसमें आपको सारी पावर्स कैलकुलेट करनी थी. सी इज योर आंसर. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? You have to calculate all the powers and then compare which one is the greatest. ठीक है, आगे बढ़े. परफेक्ट. चलो, लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी दिस. क्या लिखा हुआ है? Air at a pressure of 1 into 10 raised to the power of 5 is trapped in a container by a piston. Perfect. Force is applied to move the piston down into the container. The temperature of the air remains constant. We have discussed this in earlier classes as well. जब भी temperature of the air constant रहेगा, we will apply Boyle's law. We will apply Boyle's law. ठीक है. The distance between the base of the container and piston decreases from 0.18 meters to 0.15 meters. Calculate the new pressure inside the container. Very, very, very easy. Very easy. Beta, do you remember that Boyle's law can also be written like this? P1 V1 is equals to P2 V2. What is the initial pressure? 1 into 10 is the power of 5. Perfect. What is the initial volume? The area of this piston. Let's label this area as A, multiplied by the height, that is 0.18. What is the pressure 2 or the final pressure? We don't know. What is the volume 2? Area into the height, that has now decreased to 0.15. Perfect. Anything getting cancelled out? Area get cancelled out. 10 raised to the power of 5 into 0.18 divided by 0.15. Your pressure at 2 comes out to be what? Calculate karo bhai zara. 10 raised to the power of 5 into 0.18 divided by 0.15. Your answer comes out to be 120 into 10 raised to the power of 5. Clear हो गई बात बच्चों? Yes or no? Give me a thumbs up in the chat if this is clear. Thumbs down if this is not. Basic Boyle's law का सवाल है. Nothing complicated. Yes, is this clear? आगे बढ़ते हैं भाई. चलो. Let's see this. Uh, a sealed gas syringe contains a gas that is kept at constant volume. Okay. Now, if your volume is constant, beta, then which relationship are we talking about? Pressure is directly proportional to temperature. Which row describes how a change in temperature of the gas affects the pressure? Pressure decreases and
Pressure, no. Pressure, temperature increases, pressure increases. C is your answer. Because if your volume is constant, if your volume is constant, बेटा आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है वो दोनों चीज़ें साथ मूव करना शुरू कर देती हैं। इफ प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, सिंपल। अच्छा ये देखो, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड इज दिस। व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड इन केल्विन स्केल? सिंपल, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 1064। शाबाश, टेक आउट योर कैलकुलेटर्स। 273 प्लस 1064, दिस कम्स आउट टू बी 1337। डी इज योर आंसर। लेट्स further move ahead. The table shows the melting and boiling temperatures of three elements. At which temperatures are the three elements in three different states? Wow, what a beautiful question. चलो बेटा, इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, यस और नो? पिछली क्लास में एक चीज़ सिखाई थी, नंबर लाइन बना लिया करो बेटा। लेट्स से दिस इज -189, लेट्स से दिस इज -185। ठीक है, और ये है आर्गन। ठीक है, ये है आर्गन। On the left side of this, you will be a solid. In between, you will be a liquid. Here, you will be a gas. Similarly, nitrogen के लिए कर लो बेटा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी but you will never get your answers wrong. uh, -210 और -196. Tuck, tuck. This is solid, this is liquid, this is gas. Let's do it for oxygen as well भाई। ऑक्सीजन के साथ भी कर लो। -218 पे क्या हो जाएगा? सॉलिड। उसके बाद -183 पे इट विल बी ओहो, -183 तो सही लिख लो। -183 पे यू विल बी here you will be a gas, here you will be a solid, here you will be a liquid. Okay, let's say you have a temperature of -220 degree centigrade. Let's say you have a temperature of -220 degree centigrade. If you have a temperature of -220 degree centigrade, argon will be solid, nitrogen will be solid, oxygen will be solid. No need for this temperature. Let's see -205 degree centigrade. At -205 degree centigrade, argon will be a solid, nitrogen will be a liquid, oxygen will be a gas. B is your answer. One second. No, oxygen will also be a liquid. एट -205 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आर्गन क्या हो जाएगा? सॉलिड। आपकी नाइट्रोजन लिक्विड, एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी अ लिक्विड बिकॉज -205 लाइज हेयर, -205 लाइज हेयर। नो, सो बी कैन नॉट बी योर आंसर एज वेल। लेट्स कैलकुलेट -190 डिग्री सेंटीग्रेड। At -190 degree centigrade, argon will be a solid because it will be somewhere here. Nitrogen will be a liquid because it is somewhere here. At -190 degree, no, 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 no. Argon, nitrogen क्या हो जाएगा? Nitrogen will be a gas here. -190 का यहाँ पे लाई करता है. And oxygen will be a liquid. -190 lies here. So yeah, C is your answer. बेटा समझ आई ये बात? इसमें देखो, नंबर लाइंस जब तक नहीं बनाओगे बहुत कंफ्यूज होगे। नंबर लाइंस जब तक नहीं बनाओगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इफ यू सी -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर्गन इज अ सॉलिड, नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ लिक्विड। समझ आई बेटा ये बात? यस और नो? एवरीवन इन द चैट काइंडली बी एक्टिव भाई, बी एक्टिव। रोजा लग रहा है सारों को। यस, इज इट क्लियर? यस और नो? तुम लोग तो बोल भी नहीं रहे फिर भी रोजा कैसे लग रहा है तुम लोग? वेरी गुड। चलो लेट्स फर्दर मूव अहेड। द डायग्राम शोज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन अ बीकर। ठीक है। What reduces the rate of loss by evaporation? Okay. What reduces the rate of loss by evaporation? Okay. Now, blowing air across the top of the beaker, this increases evaporation. Heating the liquid, this increases the evaporation. Putting the lid on a beaker decreases the rate of an evaporation. What is the color and what is the texture of the best absorber of infrared?
The color will be black. The texture will be dull. B is your answer. कुछ क्वेश्चंस बीच में बहुत ही आसान दे देता है कि जाओ एंजॉय करो. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बड़े ही कैलकुलेशंस वाले होते हैं. Which row gives the velocity and wavelength of a wave that is an ultrasound wave? Now here apply some logic. Ultrasound waves are those waves which have a frequency of greater than 20,000 hertz. Beta, any wave that has a frequency of greater than 20,000 hertz is your ultrasound wave. So now let's start calculating it. For A, you have a velocity of 330 meters per second. Your wavelength is 6.6 centimeters. So 6.6 divided by 100. Can you calculate the frequency? Yeah. V is equals to F lambda. 330 divided by lambda, that is 6.6 divided by 100. Your frequency comes out to be what? 330 divided by 6.6 divided by 100. This comes out to be what? 5000 hertz. No, rejected by A को हम reject करते हैं. No, this cannot be your answer. You have to find a wave that has a frequency greater than 20,000. And let's try out B. In B, your velocity is 890. Your lambda is 89. 89 over 100. Let's do that. 890. Guys, kindly take a calculator and try it out. ऐसे बैठे हुए जैसे मूवी चल रही है. This is 1000 hertz. 1000 hertz की frequency is also not what we need. This also gets cancelled out. If you can give the answer before me, that will be really impressive. V is equals to F lambda lagao for C. Velocity is 1500. Frequency you have to calculate. Lambda is what? 6 over 100. So 1500 divided by 6 over 100. This gives you a value of 25,000 hertz. I guess I have gotten my lucky number. C is your answer. Your frequency should be greater than 20,000 hertz. और 25,000 hertz क्या आ रही है? C की value. C is my option. बेटा D नहीं होगा. D couldn't be your option. D की frequency कम आ रही होगी. Okay. What is the angle of reflection? Okay, let's calculate the angle of reflection. Very, very easy. What is the angle of reflection? The angle between the reflected ray and the normal. This thing. Angle of reflection and angle of incidence are same. This will also be X. This thing is what? 30 degrees. Now in mathematics, I hope so you guys have studied that angles on a line is equals to 180 degree. 180 is equals to 30 plus X plus X. Let's subtract it there. 120 is equals to 2x. X is equals to 60 degrees. B is your answer. Simple as that, nothing complicated. Chalo. An object is placed in front of a plane mirror. Which diagram shows the image formed by the mirror? Very good. Beta, जो mirror image form करता है, that is what? Yes. The image that the mirror forms is first of all upright. Second of all, it has the same distance. The perpendicular distance of the object from the mirror is the same as the perpendicular distance of the image from the mirror. बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द मिरर तो आपकी इमेज भी 2 सेंटीमीटर अवे बनेगी फ्रॉम द मिरर. सो सी एंड डी आर लिटरली द मोस्ट फनीएस्ट ऑप्शंस. या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी. You have to remember that the image that the mirror forms is upright as well. A is your answer. 21 ka answer is A. Nothing complicated. Aha. Chalo, let's move ahead. Okay students, so let's look at this question. The diagram shows a ray of light traveling from air to medium Q. Perfect. What is the critical angle for the boundary between medium Q and the air? Perfect. So we have to calculate the critical angle for medium Q. First of all, what we can do is calculate the refractive index. First of all, we can calculate the refractive index of medium Q. If you analyze, medium Q is the second medium, air is the first medium.
What is the formula of refractive index for the second medium? The formula for refractive index of the second medium is sine I over sine R. Now, what is second and first medium? First medium is the medium in which the ray starts. Can you see the ray is starting in air? And the second medium is the medium in which the ray ends. Can you see the ray is ending in medium Q? Simple. Refractive index is equal to sine of angle of incidence. What is the angle of incidence? This angle. This will be equal to what? 90 minus 42, that is equals to 48 degrees. Sine 48 divided by this sine angle, that is angle of refraction. Can you calculate this angle of refraction? Yes, 90 minus 49.5, this comes out to be 40.5. So sine 40.5, what does your refractive index comes out to be? Sine 48 divided by sine 40.5. What does your refractive index comes out to be? Your refractive index comes out to be 1.144. Simple. Now another formula that I have taught you guys is refractive index is equals to 1 over sine c. Perfect. Sine c is your critical angle, 1 over 1.144. Critical angle c comes out to be what? Sine inverse of 1 over 1.44. Can you calculate this angle? Sine inverse 1 divided by answer. This comes out to be 60.9 degrees. C is your answer. Simple as that. Which two components are of the electromagnetic spectrum? X-rays and microwaves. D is your correct answer. The diagram shows an iron nail in four different situations. In which diagram is the nail an induced magnet? बेटा कौन से डायग्राम में नेल आपका इंड्यूस मैग्नेट है? व्हाट डू आई मीन बाय इंड्यूस मैग्नेट या इंड्यूस मैग्नेट कह लो या फिर आप ये कह लो कि टेम्पररी मैग्नेट. इन विच डायग्राम इज योर नेल अ टेम्पररी मैग्नेट? नो 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 नो, थोड़ा सा और सोचो बेटा. क्लोज इनफ बट नॉट करेक्ट. अच्छा, इंड्यूस मैग्नेट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? टेम्पररी तौर पे मैग्नेटाइजेशन हो रही है. टेम्पररी तौर पे मैग्नेटाइजेशन हो रही है. सो सी एंड डी कैन नॉट बी योर ऑप्शंस बेटा. सी एंड डी वी ऑलवेज यूज सोलोनॉइड. वी ऑलवेज यूज सोलोनॉइड फॉर व्हाट? वी ऑलवेज यूज सोलोनॉइड फॉर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. तो सी और डी तो ऑप्शंस नहीं होंगे बेटा. अगर थोड़ा सा अक्ल लगाओगे तो सी और डी को कैंसिल आउट कर दोगे. अच्छा, अब बचा ऑप्शन ए और अब बचा ऑप्शन बी. Always remember induced magnetization. Always remember induced magnetization can be caused by what? Can be caused by a permanent magnet. A is your answer. बेटा हमेशा याद है जब हम मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करवाते थे तो हमें एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए होता था. दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन. This process is similar to the magnetization of iron, if you remember. Let's further move ahead. Which row correctly shows a magnetic material and a non-magnetic material? Magnetic material कौन सा है भाई? Iron. Non-magnetic material C. C is your answer. 25 का answer is C. Let's further move ahead. अच्छा, let's see this. A freely suspended magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field as shown. The magnet is viewed from above. Perfect. Magnet जो है वो above से हम view कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. What happens to the magnet when it is released? Okay. What happens to the magnet when it is released? We have discussed an exact similar thing in the theory का paper. बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रही हैं, ठीक है, if the magnetic field lines are going like this will be your north pole, this will be your south pole. Do you agree? This will be your north pole, this will be your south pole. Okay, what will happen here?
what will happen here? ये भी north, ये भी north, ये भी north, ये भी north. Okay, what will happen here? This south, 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 south. Simple. So what will happen? This south pole will get attracted towards the north, and this north pole will get attracted towards the south. This will cause a rotation in which direction? In the anti-clockwise direction. This will cause a rotation in the anti-clockwise direction. तो ये clockwise वाले options तो cancel कर दो. Okay. And once you have rotated 90 degree, बेटा ये हमने theory में इतना discuss किया था. Once we have rotated 90 degrees, what will happen? This magnet will become parallel to the magnetic field lines and it will stop moving. B is your answer. Is this clear to everyone? Then we move ahead. इसको थोड़ा सा elaborate करके पूछो जब तक मैं ये सवाल करता हूँ. A plastic rod becomes charged when it is rubbed with a cloth. Which statement gives the reason for the charge of the rod? अच्छा, a plastic rod becomes charged. तो बेटा ये जो प्रोटॉन्स वाले ऑप्शन है उनको तो फौरन से कैंसिल कर दो. प्रोटॉन्स नेवर मूव. A and C option will get cancelled out. The plastic rod loses electrons and become negatively charged. ये भी incorrect है. जो चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है it becomes positively charged. D is your answer. Let's move ahead. Let's see this way. Four resistors, each of resistance R are connected in series with an electromotive force of E. From left to right, what is the current in each resistor? बेटा कितना ही इसने बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछा है. सीरीज सर्किट में आपसे करंट पूछ रहा है. Total resistance will be what? 4R. EMF is E. So V is equals to IR. Formula लगाओ. EMF is E. Resistance is 4R. Current comes out to be what? E over 4R. Simple as that. कोई ऑप्शन है ऐसा? A is your option. Simple. How can 1 volt be expressed? बेटा 1 volt को किस तरह निकाल सकते हो आप? 1 volt और वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स. तो जूल्स पर कूलम. डी इज योर आंसर. Joules per coulomb. D is your answer. Nothing complicated. Let's further move ahead. X is a piece of wire with length L, cross sectional area A, and resistance R. Okay. Y is made from the same material and is connected to wire X to produce a component with a total resistance of R over 2. Very good. What are the dimensions of Y and how it is connected to X? बेटा क्या लगता है? देखो क्या हो रहा है. X is a piece of wire with length L, area A and resistance R. ठीक है. X जो है वो लेंथ L का है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है. अब Y जब आपने X के साथ कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? टोटल R ओवर 2. तो बेटा आप सीरीज में तो कनेक्ट नहीं करोगे. ये B और अपना D का ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो. बिकॉज सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है. ओके. सो व्हाट कैन यू डू हियर? इफ यू एग्जामिन ऑप्शन ए, अगर आपकी y की लेंथ डबल है और एरिया 0.25 है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? अगर लेंथ डबल हो गई बेटा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी. एरिया 1/4 हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? लेट मी पुट इन द रिलेशनशिप्स हियर एज वेल भाई, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. अगर आपको याद हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो इफ लेंथ डबल्स, योर रेजिस्टेंस डबल्स. ओके. सो बेसिकली बेटा अगर आपकी लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस विल डबल. परफेक्ट. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू एरिया? इफ यू रिमेंबर, रेजिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है. Resistance was inversely proportional to area. So what is happening to area? Area is decreasing by a factor of 4. तो आपकी resistance क्या हो जाएगी बेटा? Resistance will increase by a factor of 4.
resistance 2R थी, it will become 8R. hmm. For scenario number A, बेटा for scenario number A आपकी लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस डबल हो गई, एरिया 0.25 हो गया, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गई. परफेक्ट. दिस इज 8R. ओके. नाउ अगर आई assume that my y is 8R, I connect this R with 8R. What do you think? Will I get R over 2? Will I get R over 2? No, I will not get R over 2. You can calculate the total resistance as well. Total resistance comes out to be 8 over 9. बेटा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आती है 8/9R. यू कैन कैलकुलेट इट. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. ऑप्शन ए इज नॉट अ गुड ऑप्शन. नाउ इफ यू आर अ लिटिल जीनियस यू विल से भाई कि ऑप्शन ए भी अगर आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली सी विल बी माई आंसर. बट लेट्स चेक दैट आउट एज वेल. भाई लेट्स सी, हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना ज़्यादा से ज़्यादा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. फॉर ऑप्शन सी योर लेंथ इज 4 टाइम्स, योर एरिया इज 4 टाइम्स. So you know resistance is directly proportional to length. As length goes to 4L, your resistance becomes 4R. Perfect. Now you also know resistance is inversely proportional to area. If area goes to 4A, what will happen? Area increases by 4 times. What will happen? Your resistance will decrease by 4 times. This becomes R. Okay, okay, okay. So now if I connect a resistor R with a parallel resistor R, what will your total resistance be? R over 2. C is your answer. Is this clear, beta? Which circuit contains a fuse and a diode? Which circuit contains a fuse and a diode? In option A, I don't have a fuse. In option B, I don't have a diode. In option C, I don't have a fuse again. In option D, I have a fuse as well. This yellow highlighted thing is a fuse. And this is a diode. D is your answer. Simple. How is energy transferred within a kettle that is powered by the main supply? भाई energy किस तरह transfer होती है in a kettle that is powered by a main supply? Yes. Electrical work done gets converted into what? Electrical work done gets converted into what? Any ideas, geniuses? कभी kettle use की है? Electrical work done gets converted into thermal energy. Let's further move ahead. A magnet moves through a coil of wire as shown. Perfect. Magnetic poles are produced at two ends of the coil as the magnet enters and as the magnet leaves the coil. Perfect. Which pole is induced at P when the magnet enters the coil and which pole is induced at Q when the magnet leaves the coil? Perfect. So this is a basic Lenz's law question. This is a basic Lenz's law question. If you move the magnet inside, if you move the magnet inside, you are pushing it towards the right. The solenoid will push it away towards the left. The solenoid will push it away towards the left. What pole do you require at point P to cause this repulsion? North pole. P will be north pole. Now let's say you are moving the magnet out of the solenoid. This is north pole, this is south pole. You are moving it towards the right. The solenoid will try to pull it towards the left. To pull this magnet towards the left, this should be north pole to create a force of attraction. Which one is your answer, bhai? What will be your answer? A is your answer. Simple as that. Let's further move ahead. Okay, okay, okay. What an interesting question. A straight vertical wire carries a current in the direction shown. Perfect. The current is going into the page. What will be the direction of the magnetic field lines? The magnetic field lines will be in the clockwise direction. If you want to apply right hand grip rule, you can do that as well. If you want to apply right hand grip rule, you can do that as well. But the current is going in which direction? In the clockwise direction. And you have to make sure of one thing. A and B options will get cancelled out immediately. बेटा A and B options को मैं immediately cancel out कर दूंगा. Why?
because in it the distance between the circles remain constant. आपका सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस क्या करना चाहिए, इंक्रीज. So C and D causes the distance between the circle to increase, and which one is clockwise? D is your clockwise. Which part of a simple DC motor reverses the direction of current in the coil once every half rotation of the coil? बेटा डीसी मोटर में क्या चीज़ आपके करंट का डायरेक्शन रोटेट करती है? ऑलवेज रिमेंबर इन अ डीसी मोटर द स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. Which statement about the notation RZ is correct? R is the nucleon number which is different for different isotopes of X. Yeah, this is correct. बेटा R क्या है आपका? न्यूक्लियन नंबर. दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स. बिल्कुल करेक्ट बात कर रहे हैं. अच्छा वैसे ये चीज़ तो केमिस्ट्री में सिखाई जाती है, बट लेट मी डू दिस हियर एज वेल बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू टेक केमिस्ट्री. बेटा ये जो टॉप वाला नंबर है उसको हम दो नाम देते हैं, या तो न्यूक्लियन नंबर या फिर मास नंबर. और ये जो बॉटम वाला नंबर है दिस इज ऑल्सो गिवन टू नेम्स. दैट इज व्हाट? प्रोटॉन नंबर and atomic number. Simple as that. Chalo, let's move on to question 37. During a radioactivity experiment, the background reading is 28 counts per minute perfect. A radioactive source is placed 2 centimeter in front of a detector which is connected to a counter perfect. Counter readings are taken with and without sheets of different material placed between the source and the detector. Perfect. The background radiation is this, remember. Okay. So when no sheet is placed, you have a reading of 750. When a thin card is placed, you have a reading of 750. That means what? No alpha are present. That means no alpha are present. When you place an aluminum sheet, the count rate drops to 478. This means beta particles are present. Beta, and can you realize that this count rate hasn't dropped to zero? That means there are some particles that are passing through this thick aluminum sheet. What can be the particles that pass through the thick aluminum sheet? Gamma. So beta particles and gamma particles are present. D is your answer. Let's further move ahead. Let's see question number 38. A radioactive isotope is injected into a patient as a part of a medical test. The radiation emitted is detected outside the body. Perfect. What are suitable properties for these isotopes? What are suitable properties for these isotopes? Yes. बेटा कौन सा आइसोटोप्स हम यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई ऐसा आइसोटोप होना चाहिए जो बॉडी के थ्रू पास कर जाए. बीटा एंड गामा हैव वेरी लो पेनिट्रेशन पावर. दे सॉरी, बीटा एंड अल्फा हैव वेरी लो पेनिट्रेशन पावर, सो दे विल नॉट बी यूज्ड. एंड वन मोर थिंग दैट यू वांट फ्रॉम दिस आइसोटोप इज कि इसकी हाफ लाइफ कम हो. ठीक है, तो सी विल बी योर आंसर. सिंपल. Let's move ahead. A student writes four statements about the solar systems. A light takes approximately 3 into 10 raised to the power of 8 seconds to travel from the sun to the earth. No. Light कितने seconds लेती है बेटा? 500 seconds. The earth takes approximately 24 seconds to rotate on its axis once. Yes. 24 hours, sorry. The moon takes 1 month to rotate around the earth. Yes, that's correct. 2 and 3 are correct. Are there any options like that? Yes. C is your answer. हाँ. और ऑप्शन डी तो फोर तो वैसे भी इनकरेक्ट है. वेरी गुड. What is never formed by the explosion of a red supergiant? When a red supergiant explodes, a black hole is formed, neutron star is formed, heavier metals are formed. A white dwarf is never formed. A white dwarf is formed when we have a red giant star.